ngon hige ngon ege pengo ngo ge to seon ege hige ja he ji kuigin gukin ja he ji nga tan gukin inde. I think the ground is fertile. There's so much growth and so many points of possibility. तो ऐसे मेरे दिल में ये होता है कि मेरा जीवन वहाँ व्यतीत हो रहा है, यहाँ में कोई जैसे पक्षी आ जाता है, बसेरा करता है, उड़ जाता है जैसे ही। ऐसे है ना, ये अब महल पड़े हैं, निशानियाँ राज्य की, रजवाड़े ख़त्म हो गए हैं, तो अब लोग यहाँ देखने आते तो राजे का याद आता, यहाँ राजे रहते थे और वो राजपाट ख़त्म हो गया है। पत्थर है और कंधे हैं, ये राजे की यादगारी है। इसलिए हमारा जो है भेड़ बकरी का कल्चर जो है वो भी अब ख़त्म हो रहा है। 10% से 1% रह गया, 9% ख़त्म है। और हमारे पास क्या निशानी रह गई है, एक कोट जो है उनका ये रही है निशान कि हम भेड़े चुगाते थे, वो हमारे पास भेड़े थी। 11 साल का था मैं तो भेड़े के साथ गया था, तो कुछ साल तो मुझे ऐसा लगा कि क्या बनेगा क्या, मुझे घर का भी पता नहीं चलता, डेरे का भी, उसका दूध भी निकालने नहीं आता, रोटी नहीं पकाने आता, तो मैंने ऐसे करना कि उसको आटे को ऐसे ही गिल्ले कच्चे को खाना पड़ता है। बाद में फिर उससे थोड़ा काम चला, बाद में सही काम चल पड़ा। तो जो भेड़े चुगाते थे, एक लड़का 4 लड़के मेरे साथ भेड़े चुगाता था, उसकी डेथ हो गई, फिर हम भी लड़खड़ा गए, तो भेड़े का भी निष्ठ वेस्ट हो गया, बेच बाच दी, कोई मर गई कोई बेच दी। तो अब हम घर में आ गए हैं, तो घर में हमारा दिल नहीं लगता, क्योंकि हमने पूरी उम्र बाहर ही गुजारी है, 11 साल से बाद बाहर ही आज खाना। ये काम क्यों ख़त्म हो रहा है, जो आगे की लुआद है वो बिल्कुल नहीं देखना चाहती है, वो बोलती है कि हम फाके रह लेंगे, इस काम को नहीं करेंगे। और दूसरा बात ये है, अभी कल युग आ गया, कला का काम है, जो भी चीज़ है इनसे नफरत कर रही है। दूसरा नंबर ये है, मौसम जो है बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है ना, टाइम की बारिश नहीं होती है, बर्फ़ नहीं गिरती है, ग्लेशियर नहीं बनता है, तो पानी नहीं होता है। बेटाइमी बारिश होती है, बर्फ़ गिरती है, तो जीव जंतु जो शिव जी छोड़ देता है वो सब नष्ट हो जाता है। बस वो भेड़े भी कमज़ोर हो जाती है, टाइम के बारिश नहीं होगी, घास नहीं होगा, तो मौसम जो है खरे काम जो है वो बिल्कुल कमती हो रहे हैं, और अत्याचार बुरे काम ज़्यादा है। पहले हमारे पास कच्चे कमरे थे मिट्टी के, 2 कमरे नीचे, 1 कमरा ऊपर किचन का, इसमें गुजारा करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे मिट्टी के मकान था, जैसे मिट्टी के वो बन जाते थे शाम को धूड़ में। फिर बाद में हमने थोड़ा थोड़ा पैसा ऊपर से भेजा, हमने तो कभी कभी आना दिन का, रात को आना और सुबह चले जाना। फिर मुझे पता नहीं, फिर डाले हमने, 1 कमरा डाला, 2 डाले, 3 4 5 कमरे डाले। मैं तो पैसे भेजता, मैं आना रात को, जैसे मेहमान आते हैं शाम को आना और सुबह रात को निकल जाना, क्योंकि वहाँ भेड़े संभालने वाला कोई नहीं था, बच्चे छोटे थे। तो बाद में ऐसे ऐसे उनकी रेजिमेंट की है। फिर बाद में मैं भी बूढ़ा हो गया, मैंने भी रिटायरमेंट ले ली। अब जो है रिश्ते में आगे क्या पता क्या बनेगा इस ज़माने में, कभी भी कुछ भी हो सकता। अब ऐसे ही कमा रहे हैं रोजी रोटी, बस वो माल को आगे चराने जानते नहीं थे, तो मैं वृद्ध हो गया। तो अभी ऐसे होता, सुबह चले जाता हूँ मैं, जब 4 बजते हैं, इंद्रहार देखना है, नाग छतरी देखना है, पहाड़ी पूरी देखनी है 2-3 घंटे, फिर आना है, शाम को फिर जाना है। यहाँ मेरा काम चल रहा है, उसको देख के मेरे दिल में शांति आ जाती है। ठीक है, मैं वहाँ इंद्रहार में हूँ, धौलीधार में हूँ, वहाँ ही हूँ।
There's brilliance here, there's talent here. Sometimes things have to burn for the opportunity to rise up. I've known many other places, but Milwaukee is definitely home. I've been here for 20 years. Thought I was coming to Milwaukee just to regroup, and I've been here ever since. My family migrated here from the South. I come from a family of equestrians, of farmers, but unfortunately was not able to know that birthright because of racism. Like 500 acres of my grandfather's land was taken forcibly. They burned down the city hall where all the records were kept in terms of the deeds to the land. And then the Ku Klux Klan came and set a fire to my grandfather's land, and my grandfather didn't have a way to fight it. Thought he would come to Milwaukee and keep his family safe. So they came here. It was more they fled here for opportunity. You know, every time there was another executive position or an opportunity, we moved. They moved to Detroit, we moved to New York. It was kind of like climbing the ladder, if you will. Grew up in a really, really, really diverse community between Brooklyn and Harlem and Bronx and all the places in between. Coming to Milwaukee was different. Not having walkable neighborhoods, not having sidewalks, or not having the easiest transit system was a shock, as well as a lack of diversity in places. I'd go to downtown Milwaukee and I'd be the only person of color in a room, or I'd go to a play and we'd be the only people of color in the building. When studies come out or research as it relates to livability and the best places for African Americans to live in the United States, Milwaukee is about the worst. We're as close to the worst as you can possibly get. How did we get here? How did we become, one of the cities that's the worst place for an African American person to live? When you think about what happens over time, it wasn't by happenstance. It's based in history, it's based in legislation, it's based in urban planning and how we built our highways and our streets. It was a strategic way to ensure that there wasn't pathways to the economy, that there wasn't access to even employment, because you're not on a bus line. Health-wise, our life expectancy in the central city is less than if you go a couple of miles out to the suburb. It's been institutionalized, this system of inequity, and that's happened, that's the legacy since 1619 when slavery began. I grew up in this way of understanding that you always leave something better than you found it. My lived work is a community change agent. I feel like it's definitely like this spirit gift. I'm a strategist at heart, so I see relationships, I see how they connect, I see opportunity, not just for me, but for others, because I know that was such a critical point in my family's trajectory. The building that we're now sitting in was a former bank that was burned. As a result of the uprising, after an African American man was shot in the back by a police officer, this building was presented to us as an opportunity. Everything was taken back to the studs, so we had to reimagine how the space could potentially be used. The intention was just this radiant space for all of the assets that rest within African American communities to shine and to exist. Creating a space that all were welcome, creating this community within the community. And here we are. 29 primarily African American businesses. I don't care what the news will say. I don't care how people will try to portray us. In the heart of the Sherman Park neighborhood. This is Milwaukee. So when you think about the Phoenix, there's a great sense of ownership, not just from the financial perspective, but from the understanding that this is a great monument in community. This is a great testament to all of our greatness. And that expands beyond the walls. There's a lot of division and there's a lot of growth. I keep using this word possibilities because at times that's all we had, was a thought, a notion that things could and had to get better, and then had to work in order to see some of these dreams come to fruition. The burning is a metaphor for possibility.
Uituela ipatse inte Kuikuro ita. Uitite yamalui Kuikuro menaco. Derei Witsaga. Julio lehan de Julio, Nebekatizag. The Hina Leha Setale again, Dale Kuiganda Tile. Kuigi Satu town Koekele. And the Leha Naleti Luila, Terlukilesele. Hakialitoni Petep 5 kilometri di Toni. Where we gay Moto Landele. Ingo Gale, Nalwaki la Picompi. Hotui, Terlukion Celu, Lepena Bisiata, Bicicleta. Lepena moto e Nilande le moto. Unite line e Huata l'hotel. Tutte hinde ni kote tuisi like sinzanaga ni quite sinzanaga tihinyango te totse kitsoni tuge hala kuige tuhinyango dit tuhinyango ige tiho kuigi si hugangi ko holi nyal la tinyego annago ihole ti hoihel tomati holige kuigi ti talapenya kuiño tinyal i otinyal ya talape linyal sek te kungal sek la late ha ke kuitsoni hanga sek ya ni ko ke shingoto moheke te loko nale ke le soja ite ali ke tengo uko si huele shingoto mañana soja etso nyalo soja llega ni te loge Kuikuro kalapal no fin de tsakangin du genya bani na go ge le tsa tinyo itsuka ngo he tagali he ke nyalo ha ngo pilati nyengo tinye nyali soni pilati nyengo tanami nyalo he ge pe pilati nyengo ye tuande hatua tua hadi nene ye kule wa teglindele tatu sin de he kite wa he tenga lo he de huñe go inga lo he le gei tua ke ta tua gei en que tapa kai ha ke ni ko ha je sai ngo ge te le tua ke ta tu tua ui tegata ti hande hela kai hago tunalega he hijo hela uge hela ngi ko ui tegata ti hela he hijo hela heke he holla sa te inde la to ngi ko ti holla ha age ha ngi hijo tu go hala te to itsi ha le ti holla te go le heke le kai hanya ti otte heke sa age papeka ni ko ke ngongo kan tsa he holo ngongo kan tsa la he holo ha o he ke ha so itaginyo ha ge etso ke ku ha ko pe ku I ku ha tuan ha tsonian ha otian ha tsoni tenangi ko ha indi bo tatua indi ha tsoni na o te to tuan ku ha kinyango ki to te to ha tuan otio ha ni ko hiso ki to te to ha eku ha imbotaki to te to la telgei itsuke ku ha tsipe ku pe ku ku ha ni kogonya ha le hige ha itsoni to go ege ngi ha ta te to ni ko wa te ge la tengi ko ki hyong ha tuai tsu ni hyong ha tsuai te loita ti weto tenyo ta pirape ta te makai ta te tapira peko ke wige tuna sam tahisuma ina na sina go sa ga te tele ko tinha bake kine ande tim bake o wege le ku pen he ki tinte tatan igele ke ga iha le signal ha inde ku patse ga itsuke kwa te ga kuili o ga patse inde huangile patse ge
A pija ige ngongoi hetiñi. A pico. La tegele na go ngin to gele ho ki ya te wi to te gele. I pa chat.